Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 8 and the chapter name is measurement measurement. So in this chapter we are going to study about measurement of length, measuring length using a ruler, conversion of length units, addition of units of length, subtraction of units of length, measurement of weight, conversion of mass units, and addition of units of weight, subtraction of units of weight, measurement of capacity, conversion of capacity unit, conversion of capacity unit, addition of units of capacity, subtraction of units of capacity. So let's start class. R span. Class, what is this I span? आपके हैंड से थंब के लास्ट फिंगर तक जो हमारा स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं आर स्पैन। और जो आपका ये एल्बो टू लॉन्ग फिंगर का जो स्पेस होता है वो क्या होता है आर क्यूबिट। और जो आपके आगे पैर और पीछे पैर में जब आप चलते हैं वो जो स्पेस होता है वो क्या होता है आप पेस। ओके क्लास, नाउ use the given parts of your body to measure. Now question number 1, your desk. क्लास, आपको अपनी डेस्क को क्यूबिट्स और पैंस में मेजर करना है, तो you have to measure and write it here. Okay, and a pencil on a span. Okay, you have to measure and write it here. Now third, the blackboard. अब आपको ब्लैकबोर्ड को मेजर करके अपने यहाँ पर फिल करना है। ओके क्लास, नाउ योर क्लासरूम को आपने पेसेस में आपको मेजर करके you have to write here. Okay, now which unit of length, meter or centimeter, is to be used for measuring the length of the following? Class, अब हमें जो यूनिट्स हैं आपको मीटर और सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। यूनिट को मीटर और सेंटीमीटर में यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब आप कार को किस में, मीटर में करेंगे, यस, और बस को भी मीटर में करेंगे, और पेंसिल, बिकॉज पेंसिल इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं क्लास। और निडल इज ऑल्सो अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, सो वी यूज अगेन सेंटीमीटर, अ पेन सेंटीमीटर, अ मोबाइल फोन ऑल्सो सेंटीमीटर। ओके क्लास, नाउ measurement of length. In the previous class, we have studied that the length of an object can be measured with the help of various methods. आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि जो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, कैन बी measured, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड। हम उसको वेरियस मीन्स बहुत सारे मेथड से हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड इन सेवरल टाइम्स, सेवरल मतलब बहुत बार, सेवरल यूनिट्स, और उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ओके, बट इन सिंप्लीफाई द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड दे आर यूज इन फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, they are used in further mathematical calculation. A standard unit of length is used to throughout the world. Okay, standard unit of length are meter. Okay, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर करने की, वो क्या होती है लेंथ को, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, मीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। नाउ मीटर, वी यूज मीटर फॉर मेजरिंग मीडियम लेंथ। मीडियम लेंथ को हम मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। किसका, मीटर का। लाइक लेंथ ऑफ अ बॉल, हाइट ऑफ अ पोल, length of cloth, etc. Length of cloth, etc. The short form of meter is m. हम उसको short form में m से denote करते हैं। Now centimeter class, centimeter. For example, measuring smaller length. I told you smaller length, like the length of a pencil, height of a glass, length of a book, etc. We use a smaller unit called centimeter. The short form of centimeter is cm. Okay, now kilometer class.
फॉर मीजरिंग वेरी लॉन्ग लेंथ, वेरी लॉन्ग मतलब बहुत लंबा लेंथ, सच एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, हमें बहुत लंबा जो हमारा डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम अपना किलोमीटर का यूज करते हैं. लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज लाइक दिल्ली टू मेरठ. ओके, the height of a mountain, the length of a river or road, etc. We use a larger unit called kilometer. The short form of kilometer is this. Okay. Now, 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Understood, class? Measuring length using a ruler, we measure the length of an object by a meter scale or a ruler. Okay. To measure the length of an object using a ruler, it is ruler. Okay. We place the object alongside the ruler. Okay. हमें जब अपना लेंथ मेजर करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम किसका यूज करते हैं? रूलर का. वी प्लेस द ऑब्जेक्ट alongside the ruler with the end of the object at the zero mark, at the zero mark, okay, of the ruler as shown below. हम अपने ऑब्जेक्ट को जीरो मार्क से उस पे आपको हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे और उसको फिर यहाँ से मेजर करेंगे. लाइक द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर. Then we take the reading at the other end of the object. Okay. This gives us the length of the object. Clearly, the length of the above pencil is 4 centimeters. Understood? Now, come on the exercise 8A. Come on the exercise 8.1. Now, circle the suitable unit to measure each of the following. The length of your foot, centimeter. The height of your father is centimeter. Okay. The length of a book, centimeter. Distance from school to home, meter. The length of a chocolate bar, centimeter. Okay. Now, conversion of length units. Okay. Rule number 1, to convert meter into centimeter, multiply the number of meter by 100 and write centimeter after the product. Okay. Annex 2 zeros to the number of meter and write centimeter. Okay. Now 3 meter, that is 3 into 100 centimeter is equal to 300 centimeter. 20 meter, 20 multiplied by 100, that is 2000 centimeter. Now rule number 2, to convert meter and centimeter into centimeter, firstly convert meter into centimeter, then add the given centimeter to it. अगर हमें मीटर एंड सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम फर्स्ट कन्वर्ट मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको ऐड कर देंगे द गिवन सेंटीमीटर, ओके, टू इट. नाउ इफ द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इज इन 2 डिजिट्स, अगर कोई सेंटीमीटर का नंबर है वो 2 डिजिट्स का है, देन राइट डाउन द होल नंबर विदाउट राइटिंग m. ओके. If the number of centimeter is in 1 digit, then first put a 0 before it and then write the whole number without writing m. Okay, if the number of centimeter is 1 digit, अब हम एक 1 digit का है तो first put 0 before it and then write the whole number without writing m. Now example, 3 meter 45 centimeter, 3 meter 45 centimeter. हम मीटर को क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 100 centimeter plus 45 centimeter. 300 centimeter plus 45 centimeter. 345 centimeter. 345 centimeter. Rule number 3, to convert centimeter into meter and centimeter. Okay. Divide the number of centimeter by 100 and then write meter after the quotient and centimeter after the remainder. Divide the number of a centimeter by 100 or then write meter after the quotient and centimeter after the remainder. Okay.
Write meter after leaving 2 digits from the right and centimeter at the end of the given number. See, 455 सेंटीमीटर. सो हमने क्या किया, 2 डिजिट्स के बाद हमने उसको सेंटीमीटर, 4 मीटर 55 सेंटीमीटर, नाउ 29 meter and 85 centimeter after leaving 2 digits. Okay, 455 divided by 100, 100 fours are 400. Now remainder 55. So question is 4 meter and remainder is centimeter. Now rule number 4, convert kilometer into meter. Multiply the number of kilometer by 1000 and write meter after the product. किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से एंड राइट मीटर आफ्टर द प्रोडक्ट, और हम क्या लिखेंगे, मीटर आफ्टर द प्रोडक्ट. नाउ बी, annex 3 zeros to the number of kilometer and then write meter. A, 12 kilometer, that is 12 into 1000 meter, which means 12,000 meter. Now 30 kilometer, now multiply by 1000. Now 30,000 meter. Rule number 5, to convert kilometer and meter into meter, first convert. हमें किलोमीटर और मीटर को किस में करना है, मीटर में करना है. तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन ऐड द गिवन मीटर टू इट. नाउ बी, इफ द नंबर मीटर इज इन द 3 डिजिट, अब जो हमारा मीटर है वो 3 डिजिट में, देन राइट द होल नंबर विदाउट राइटिंग kilometer. If the number of meter is in 1 or 2 digit, then first put 2 digit or 1 zero. Then first put 2 zeros or then 2 zeros respectively before it, and then write the whole number without writing kilometer. Okay. Example, 5 kilometer, 315 meter. So firstly we will change into meter by multiply 1000. 5 into 1000 meter plus 315 meter. 5000 meter, 315 meter, 5315 meter. Now B, 12 kilometer, 20 meter. 12 kilometer, 20 meter. Firstly into 100, 1200. 12 into 1000 into 12,000 plus 20, 12,020 meter. Understood? Now rule number 6, to convert meter into kilometer and meter. अगर हमें मीटर को किलोमीटर और मीटर में करना है तो डिवाइड द नंबर ऑफ मीटर बाय 1000, देन राइट किलोमीटर आफ्टर द क्वेश्चन, मीटर आफ्टर द रिमाइंडर, मीटर आफ्टर द रिमाइंडर. राइट किलोमीटर आफ्टर लीविंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स को लीव कर फ्रॉम द राइट साइड, मीटर एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर, एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर. नाउ 4379 meter, it is 4 किलोमीटर 379 मीटर. सो हमने क्या किया, इसको 1000 4 जा 4000, ये जो रिमाइंडर होगा हमने उसको सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में. सो 18 4 किलोमीटर 379 मीटर. अगेन हमने 18,203 मीटर को क्या किया है, हमने इसको लिविंग 3 डिजिट के बाद हमने इसको किलोमीटर और इसको मीटर. नाउ 18 किलोमीटर 203 मीटर. अंडरस्टूड? Annex a zero to a number means placing a zero at the end of the number. Means placing a zero at the end of the number. Now exercise 8.2, question number 2, convert the following into centimeter. So we will multiply by 100, 800 centimeter. Again 1200 centimeter. Now 25 multiplied by is equal to 2500 centimeter. Now students, rest of the part do yourself. Now students, question number 2, convert the following meter into centimeter. Convert
following into meter and centimeter. Convert the following into meter और सेंटीमीटर. अब क्लास ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से. तो इट इज लाइक 2 मीटर 12 centimeter, leaving 2 digit. After leaving 2 digit, again 5 meter or 10 centimeter. It is, and this rest of the parts do yourself. Now students, question number 3, convert the following into meters. Now 9 kilometer multiplied by 1000. It is 9000 meter. Now again multiply by 1000, so 14,000 kilometer. Okay, now students, rest of the parts do yourself. Question number 4, convert the following into kilometer and meter. So we have to leave 3 digits. So it is 2 kilometer 369 meter. Again we have to leave 3 digits. 7 kilometer 832 meter. Okay, now students, rest of the parts do yourself. I hope you all have understood very well. Now addition of units of lengths. Now sample at 32 meter 25 centimeter and 10 meter 92 centimeter. So step 1, make 2 columns for centimeter and make 2 columns for meter and centimeter, like this, meter, centimeter, and write the number accordingly. आपको मीटर वाले डिजिट्स को मीटर वाले कॉलम में लिखना है और सेंटीमीटर वाले डिजिट को सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखना है. Now step 2, first add centimeters and write the answer in centimeter column. So 5 plus 2 7, 5 plus 2 7. Now 2 plus 9 11. So हम इस 11 को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको कैरी लगाएंगे मीटर वाली साइड से. So now write 2 below centimeter. If need arises, carry over to meter. Okay. Then step 3, then add meter and write the answer in meter column. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So the sum is 43 meter 17 centimeter. Now boost your mind. Addition of meters length is exactly same as we add ordinary numbers. Addition of meters of length is, जो addition होता है meters of length का, वो exactly क्या होता है, same होता है जैसे हम ordinary numbers को add करते हैं ऐसे. Now 1 meter is equal to 100 centimeters. So 2 digits as 2 zeros there come under centimeter. Now subtraction of units of length. Example, subtract 34 meter 17 centimeter from 48 meter 36 centimeter. So step 1, make 2 columns for meter and centimeter and write the numbers accordingly. Again 2 columns meter and centimeter, write the numbers accordingly. Meter below the meter, centimeter below the centimeter. Now step 2, first subtract centimeters. Now class 6 will become 16 because 6 में से हम 7 को minus नहीं कर सकते. 16 minus 7 9, 3 will become 2, 2 minus 1 1. Now write the answer in centimeter column. If need arises, take borrow from the next column. Okay, then step 3, then subtract meters and write answer in meter column. 8 minus 4 4, 4 minus 3 1. Now so the difference is 14 meter 19 centimeter. Okay class.
Now come on the exercise 8.3. Yes class. Solve the following. We have to add it. 8 plus 6, 14, 4, carry 1, 1, 1. Now 9 plus 3, 12, carry 1, 3 plus 1, 4, 4 plus 4, 8. Now 5 plus 0, 5, 2 plus 7, 9, 8 plus 6, 14, carry 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 3, 7. So the answer is 82 meter, 14 centimeter here, and here is 74 meter, 95 centimeter. Okay class? Now students, rest of the parts do yourself. Now measurement of weight. Measurement of weight. How much something weight depends on its mass. अगर किसी भी वो कितना वेट है उसका अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है वो उस पर किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है. द मोर मास समथिंग हैज द मोर इज इट्स वेट. अगर जो उसका मास है वो मोर होगा, ज्यादा होगा, तो समथिंग हैज द मोर it is weight. So we often use the word weight for mass. Okay, we weight something to compare its mass with that fixed weight using a balance. Using a balance. Fixed weight used to weight light things are in grams. अगर light things है तो हम उसको कैसे उसको measure करेंगे? Grams. Now those weight heavy things in kilograms. Okay, 1 kilogram is equal to 1000 grams. Now, common gram weights 50 gram, 100, 200 gram, 500 gram. Now, common kilogram weight 10 kilogram, 5 kilogram, 2 kilogram, and 1 kilogram. Okay. Now, the sides are balanced when there are equal weight on both sides. जो बैलेंस होगा वो साइड की वो इक्वल हो जाएंगी. ओके, वो इक्वल होंगी. ओके, अगर उनका जो क्या होगा वेट क्या होगा, इक्वल होगा. बोथ साइड्स आर इक्वल. यस क्लास, कम ऑन एक्सरसाइज 8.4. राइट द करेक्ट वेट टू बैलेंस द साइड. अब क्लास हम इसको बैलेंस करना है. नाउ ए पार्ट इट इज 5 किलोग्राम. इट इज 5 किलोग्राम. तो हमें इसको बैलेंस करना है. तो हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे हम 2 किलोग्राम रखेंगे एंड यहाँ पर 2 किलोग्राम ऑल्सो एंड देन 2 + 2 4. हमें फिर भी उसको 5 kg बनाना है तो 1 किलोग्राम मोर. ओके क्लास, नाउ हियर इज 600 gram. So we can write 400 gram and 200 gram. Okay, now students, you have to do rest of the parts yourself. Conversion of mass units. Now rule number 1, to convert kilogram into gram, the multiply number of kilogram by 1000 and write gram after the product. Okay, अगर हमें ग्राम किलोग्राम को ग्राम में करना है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो प्रोडक्ट होगा उसे ग्राम में लिख देंगे. नाउ we annex 3 zeros to the number of kilogram, write gram. 3 zeros of the after the number. Okay, to the number. Now 5 kilogram, 5 into 1000 gram, so it is 5000 gram. 8 kilogram, so it is 8 lakh grams. Okay, 8 lakh grams. Now rule number 2, to convert kilogram into gram. अगर हमारे पास किलोग्राम एंड ग्राम, हम उसको ग्राम में मल्टीप्लाई करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, देन ऐड. हम किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके, देन जो ग्राम होगा उसको हम ऐड कर देंगे. ओके, इफ द नंबर ऑफ ग्राम इज इन द 3 डिजिट, अगर वो 3 डिजिट्स का नंबर है, देन राइट द होल नंबर विदाउट राइटिंग kilogram. Now C part, if the number of gram is in the 1 or 2 digits, then first put 2 zeros
or 1 zeros respectively before it, उससे पहले. Then write the whole number without writing kilogram. Like kilogram, 6 kilogram, 700 gram. हमने 6 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया. कैसे? मल्टीप्लाई किया 1000 से. प्लस 712 ग्राम. 6000 plus 712 gram is equal to 6712 grams. Okay. Now 6 kilogram and 5 gram. So 6005 gram. Again 24 kilogram, 81 gram. 24 kilogram, 81 grams. So 24,081 gram. Now rule number 3, to convert gram into kilogram and gram. Divide the number gram by 1000 and then write kilogram after the question and gram after the remainder. Write kilogram leaving 3 digits. Leaving 3 digits from the right, gram at the end of the given number. So 7,543, 1,000, 1,000 sevens are 7,000. So rest 543 is gram and question is kilogram. So 7 kilogram, 543 gram. B 54,789 grams. So now again 3 digits. After leaving 3 digits, so for 54 kilogram, 789 gram. Question now come on the exercise 8.5. Question number 1, convert kilogram into grams. Kilogram को gram में convert करना. Now multiply by 1000. 7 kilogram multiply by 1000 is equal to 7000 kilogram. Now B 2 kilogram multiply by 1000 is equal to 2000 gram. Now students, I hope you all have understood very well and rest of the parts do yourself. Question number 2, convert grams into kilograms. So we have to divide the number by 1000. It will become 4 kilogram and it is 1 kilogram. Okay. Now students, rest of the parts do yourself. Addition of units of weight. Now example, add 48 kilogram, 364 grams and 26 kilogram, 942 grams. Take 2 columns. One is kilogram and second is for gram and write the numbers accordingly. Okay. Now step 2, first add gram and write the answer in gram column. Write 3 digits below gram. Now 4 plus 2, 6. 6 plus 4, 10. So carry upside. 9 plus 3, 12. 12 plus 1, 13. And 13's carry over to kilogram. Now step 3rd. Then add kilogram and write the answer in kilogram. 8 plus 6, 14. Carry 1, 15. Carry again forward. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. So the sum is 75 kilogram for 306 gram. Understood? Now subtraction of units of weight. Now example, subtract 36 kilogram 465 gram from 72 kilogram 839 gram. Now make 2 columns for the one for kilogram and one for gram and write the numbers accordingly. Okay, like this you have to make the columns. Now step 2, first subtract gram. सबसे पहले हम किसको? grams को. Then write the answer gram in column. If need arises, borrow from the next column. If need. Now 9 minus 5, 4. 3 में से 6 नहीं माइनस करते, so हमने उसको बोरो किया. 13 minus 6, 7. 8 will become 7. 7 minus 4, 3. Then subtract
kilogram and write the answer in kilogram. Now 12 minus 6, 6. 6 minus 3, 3. So the difference is 36 kilogram, 374 grams. Now it's come on the exercise 8.6. Solve the following. 8 plus 3, 11. Carry 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 6, 8. 8 plus 1, 9. 6 plus 3, 9. 7 plus 1, 8. So it is 89 kilogram, 981 grams. Now 3 plus 6, 9. 8 plus 9, 17. Carry 1. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. 9 plus 3, 12. Carry 1. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. So it is 82 kilogram, 779 grams. So students, now it is minus sum. Now 4 minus 2, 2. 8, 3 minus 1, 2. 8 minus 1, 7. 5 minus 4, 1. 9 minus 2, 7. So it is 71 kilogram, 722 grams. Okay. Now, students, measure of capacity, the quantity of a liquid milk. हम लिक्विड की क्वांटिटी किसमें करते हैं? जैसे लाइक मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा. दैट इज अ कंटेनर कैन होल्ड इट्स ओन known that a container can hold is known as its capacity. हम लिक्विड को कैसे उसको मेजर करते हैं? सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है उसकी? लीटर. द लीटर शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीटर इज एल. The quantity of liquid like milk, oil, petrol, etc. is generally measured in terms of liter. Terms of liter. The smaller quantities of liquid like medicines, etc. are generally measured in terms of milliliters. Smaller quantities. कौन सी quantities क्या? Smaller. In milliliter, the short form is milliliter is ml. 1 liter is equal to 1000 milliliter. Liquid are measured by using measurements jars. Okay. Some of the common types of measuring jars are shown alongside 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml and 1 liter. 1 liter, 2 liter, 5 liter and 10 liter. Okay class. These jars are useful in pouring and taking out liquids from deep vessels. Taking out liquid जो गहरे vessels होते हैं उनमें से बाहर निकालने के लिए हमारे लिए useful होता है. They are used in generally in measuring quantities of milk, jaljeera, etc. Okay. These are useful in pouring liquids in the vessel having a smaller mouth. उनका कैसा माउथ होता है? स्मॉलर माउथ होता है उन वेसल्स का. लाइक द पेट्रोल टैंक ऑफ अ व्हीकल, दे आर यूज्ड जनरली इन मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल, oil, etc. Now, exercise 8.7, match the most likely measure of to the following things. Now, glass is having 200 milliliter and spoon 10 milliliter, bucket 25 liter and this injection for 5 milliliter. Okay. Now, conversion of capacity units. Conversion of capacity unit. To convert liter and milliliter, A, multiply to number of liter by 1000 and write milliliter after the product. Okay. Now 3 zeros to number of liter and write milliliter. 6 liter multiply with 1000, 6000 milliliter. 30 liter multiply with 1000 is equal to 30,000 milliliter. Now rule number 2. To convert liter and milliliter into milliliter. First convert liter into milliliter, then add. हम उसको क्या करेंगे? उसमें add कर देंगे. If the number of milliliter is 3 digit, अगर वो जो मिलीलीटर का नंबर है वो 3 डिजिट्स है, देन राइट द होल नंबर विदाउट राइटिंग
liter. If the number of milliliter is 1 or 2, then first put 2 zeros or 1 zero respectively before and then write the whole number without writing liter. Okay class? Now 7 liter 655 milliliter. So firstly we will convert the liter into milliliter by multiply 1000. So 7000 milliliter 655 milliliter, it will become 7655 milliliter. Now 8 liter 3 milliliter, it is 8 liter 3 milliliter. So 8003 milliliter. Now 16 liter 22 milliliter, 16 liter 22 milliliter, 16,022 milliliter. Now to convert milliliter into liter and milliliter, divide the number of milliliter by 1000 and then write liter after the quotient and milliliter after the remainder. Now write liter after leaving 3 digits. After leaving 3 digits from the right side and meter at the end of the given number. 9256 milliliter is equal to 9 liter 256 milliliter. 1000 nines are 9000, so remainder is 256. So quotient is liter and remainder is milliliter. So 63,805 milliliter is equal to, again after leaving 3 digits. So it is 63 liter 805 milliliter. Now come on the question. Now students come on the exercise 8.8. 1. Convert liter into milliliter. We have to convert liter into milliliter. We will multiply by 1000. 3000 liter. 4 liter multiplied by 1000 is equal to 4000 liter. Now students, let's stop the part. Do yourself. Convert milliliters into liters. We have to divide by 1000, so it will become 1 liter. It will become 60 liter. And students, rest of the parts do yourself. Addition of units of capacity. Example, add 43 liters 721 milliliter and 14 liter and 596 milliliter. Make 2 columns for liter, one for liter and second for milliliter, and write the numbers accordingly like this. First add milliliter and write the answer in liter column. 6 plus 1 7, 9 plus 2 11, carry 1, 7 plus 5 12, carry 1 13, carry 1. Write 3 digits below milliliter and if need arises carry over to liter. Then add liter and write the answer in liter column. 4 plus 3 7 plus 1 8, 4 plus 1 5. So the sum is 58 liter 370 milliliter. Boost your mind. 1 liter is equal to, 1000 milliliter. So 3 digits as zeros are there come under milliliter. Subtraction of units of capacity. Example, subtract 25 liter 485 milliliter from 32 liter 439 milliliter. Step 1, make 2 column. One for liter and second for milliliter, and write the numbers accordingly. Again, step 2, first subtract milliliter and write the answer in milliliter column. If need arises, borrow from the next column. Understood? Similarly, 9 minus 7 2, it will become 13. 13 minus 8 5. 3 will become 4 will become 3 and 3 will become 13. 13 minus 4 9. It will become 11. 11 minus
5. Now then subtract liter, write the answer in liter column. Now 11 minus 5, 6, 2 minus 2, 0. So the difference is 6 liter 952 milliliter. And come on the exercise 8.9. Now solve the following. Yes class, 6 plus 3, 9, 9 plus 4, 13, carry 1, 1 plus 1, 2, 4 plus 7, 11, carry 1, 1 plus 5, 6, 6 plus 2, 8. Okay class, now again plus 8 plus 13, 11, carry 1, 1 plus 2, third, 3, 3 plus 3, 6, 10 plus 1, 8, 6 plus 4, 10. Now 1 plus 4, 5, 5 plus 2, 7. 70 liter, 861 milliliter. Okay. Now 8 minus 1, 7. It will become 16. 16 minus 7, 9. And it will become 12. 12 minus 8, 4. It will become 10. 10 minus 8, 2. It will become 4. 4 minus 1, 3. It is 32 liter milliliter. Okay class? Yes class. Students, now your chapter is completed and prepare it very well. We will meet you in next class. Thank you.